What do you want, gringo? तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग किरदार की एंट्री हो रही है, वन ऑफ द What are you doing here? हरामखोर इन दिस गेम, जिसको हम देख सकते हैं. लेट्स गो बेबी. What's going on? My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? इसका कमांडर भी हरामखोर है वैसे तो. You want to talk to my boss, gringo? ग्रिंगो. I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? ये लोग ऐसे क्यों सोचते हैं यार, मतलब ऐसे बात क्यों करते हैं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि My poor little country. नहीं. And you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax, amigo, relax. How you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's armed to the teeth? Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo. Let's come meet, drink, and then we'll talk. My name is Capitan Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroy a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you have heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. जोक क्रैक कर लिया. कॉलरा में तो बीमारी है ना. Are trying Cholera. to lure him into a trap. Possibly you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. मैं तो जाना पसंद करूंगा बिकॉज डेफिनेटली मुसीबत मिलेगी हमें. एंड अगर मुसीबत मिलती है तो सबसे कमाल की बात पता है क्या होगी, यहाँ पर इस नए रिवॉल्वर का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इवन तो हमने करी है बट यार इससे बेटर करनी है और इस्तेमाल करनी है. स्कोफील्ड रिवॉल्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी कमाल की बंदूक है. मैं छुपा रोसा में फॉलो करते हैं. छुपा रोसा में तो हमने एक मिशन करी थी लास्ट एपिसोड में जो कि लैंड एंड ट्रिकेट्स का मिशन था. याद आई वहीं पर ही हम जा रहे हैं. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught, but do not understand. Meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel? Punta Orgula Do you know? Orgullo. No. Like a papagayo? He just repeat lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly about other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe
you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make a judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better, to pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. बड़े क्वेश्चनेबल फिलोसॉफी है यार इसकी कहना मैं बता सकता हूँ आप सभी को Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela, well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of a past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor, and we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Colonel Allende for long. कौन है ये कॉलोनेल एलियंदे It is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right? मुझे याद नहीं आ रहा कौन है The right? कॉलोनेल Right. Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I thought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Abraham Reyes, he's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcón giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. Abraham Reyes Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to तो अल्टीमेटली यहाँ पर लड़ाई करनी है हमने यहाँ ठीक है मैं वही उम्मीद कर रहा था सो नाइस Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. ये चुपा रोसा है बाय द वे Come on, the train is waiting. Vámonos! Adelante! Follow D Santa. Whoa there. Yeah. There is a train.
ट्रेन इंजन वी मस्ट एस्कॉर्ट, अच्छा एस्कॉर्ट द ट्रेन। कोई भी अगर अटैक करे तो उसे बचाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान लग रहा है। बस मुझे ट्रेन के सामने नहीं आना, नहीं तो यार भाजी भरता सब हो जाएगा यहाँ पर, पता भी चलेगा नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी यहाँ पर। ओ पूरी की पूरी जनता आ गई यार, पूरी स्पॉन हो गई यहाँ पर, रेडी रेडी दिख रहा है मुझे यहाँ पर अब। हम सबको तो नहीं मार पाएंगे बिकॉज उस साइड भी तो लोग हैं ना, उस साइड तो मारना पड़ेगा उन्हें। लेट्स गो बेबी। मैनुअल टारगेटिंग लास्ट एपिसोड में जिसको हमने अनलॉक करी, बड़ी कमाल की चीज़ है, बवाल चीज़ है एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा। पीछे वाला जो बंदा है पता नहीं कितने स्लो चला रहा है वो, आई मीन अपने घोड़े को। ट्रेन इंजन को हल्का सा डैमेज पड़ा है बट अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं। राइट साइड में जो लोग हैं ना वही मेन हो गए आप। वो दूसरा बंदा कहाँ है यार? भाई डर बहुत जल्दी रहा है। वहां पर इन्होंने तो बॉम्ब बॉम्ब लगा रखा है, काफी कमाल के हैं ये रेबल्स। हाँ इनके पास काफी कमाल के हथकंडे हैं मान, स्ट्रेटजीज है लॉल। पता नहीं मैं तो ग्रैबिंग है नहीं, ट्रेन सामने आ गया मैं। यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अब दिखाते हैं इनको। ऐसा क्यों लग रहा है ट्रेन खत्म होने वाला है मैन? ट्रेन की खत्म इंजन बहुत बुरी हालत में, मैं मजाक नहीं करूंगा। अगर यहाँ से इनका खेल खत्म होता है, अगर ये मिशन फेल होता है तो यहाँ रीट्राई करना पड़ेगा, जो कि आपको एकदम पीछे से लेके जाएगा बिकॉज चेक पॉइंट्स का बहुत हार्श है। आई मीन उतने हार्श भी नहीं है बट इस मिशन का आई गेस हार्श था, मुझे जितना याद है। मे भी मैं गलत हूँ, देखते हैं। यहाँ पर भी लौंडे हो सकते हैं जिनका हमने सामना करना है। पहुँच गए कोई नहीं, मिशन सक्सेसफुल बेबी। मीटी सेंटर इन कैसा मद्रुगाड़ा, क्या मद्रुगाड़ा ही नाम है। ¿Todo bien, compadre?
did a good thing for Mexico today. Colonel Allende will be very pleased. इसका बॉस था ना अय्यंदे, आई केस उसी की बात कर रही है। एंड यहाँ पर और भी लोग हैं। मिशन कहाँ थमता है यहाँ पर इनका, आफत कहाँ थमती है। सारे के सारे रेबल्स हैं जिनके पास काफ़ी कमाल का कॉस्ट्यूम है। इसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इस गेम में, जो कि डेफिनेटली अभी हम नहीं कर रहे। बट यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ चुकी है उनकी। Levántese, perezoso, que le estoy pagando. Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Yeah. Todavía levántese. Usted. इतना तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैन। लेट्स गो। Ay, Dios mío, levántese ya mismo. घोड़ा गया मेरा भाई। दे वो जो जिन्होंने स्टेल्थ करी, हाँ ना ऐसी। अच्छा, इन्होंने हमारी पूरी ट्रेन दखल कर ली है। सो नाइस मैन। कब तक? इस ट्रेन को भी स्टॉप करना, वो उनका मेन प्लान यही है वैसे तो, ट्रेन को हथियाना था। एंड राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा सफल हुए वो लोग हथियाने में। इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है यार इस स्कोफिल्ड रिवॉल्वर का। ठीक है, अब रोकते हैं, हमें जंप करना है। रेड डेड 2 में ये फर्स्ट मैंने डिस्कवर करी, मजा आ गया था। जंप भी हो सकता है इसमें। आई मीन एक मिशन था यहाँ पर ट्रेन का। ओ ये तो बहुत ही गलत हिसाब है। रुक गया ट्रेन यार टाइम पे। पठान का सीन हो जाता नहीं तो, गंदी सीजीआई वाला, कूदना पड़ता पूरी जगह से ट्रेन के ऊपर से मार। ये ना बात $200 के बाद मैं खरीद सकता हूँ अपनी एक और $20 में भी। उस घर को भी खरीद सकते जिसमें एक आउटफिट आप अनलॉक कर सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल का है। बट यार वेपन ही इतनी बुलेट ही बढ़ानी है, वेपन में भी थोड़ी अपग्रेडेशन चाहिए जो भी है। तो दूसरे मिशन की तरफ चलते हैं। दूसरा मिशन जो है वो होने वाला है, हम करेंगे भाई साहब मैप कितना बड़ा है। इस एरिया पे अभी हम हैं, यहाँ पर एलारा करते हैं। लैंडन ट्रिकेट्स का मिशन हमने करी नहीं है, जो कि हम करना पसंद करेंगे। लेट्स गो। Come between 7 AM 10 PM। ठीक है, लैंडन रिकेट्स राइट्स अगेन। तो मुझे सुबह की तरफ आना पड़ा यार, तो दैट्स व्हाई मैं डेफिनेटली सेव करके इसको वापसी करता हुआ यहाँ पर मैं खुद, बिकॉज ये रात के वक्त था नहीं, सो रहा था अपने टाइम पे। I'm good. I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, the Stabacon, grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. उसकी बहन भी थी। Not the हाँ, close मुझे अंदाजा नहीं था। people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. अच्छा, Enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going.
You can take the train with me or ride yourself. Makes no odds to me. नहीं मैं ट्रेन लूँगा. Let's go. I've been hearing some things about you, John Marston. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? That some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the सही locals बात to है. talk. कैसे इनको वैसे पता कैसे चल रहा है वहाँ? कौन ये खबरें फैला रहा है? मेरा मिशन फेल हुआ इनको पता है. इवन मेरे कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता हो इन्हें. डेफिनेटली. टेक अ सीट. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. ट्रेन. आई गेस इसमें भी आप ट्रेन चोरी कर सकते हो अगर आपको चलाना है तो. रेडी टू में कर सकते हो डेफिनेटली. चलाई है मैंने. चोरी करके कहाँ कहाँ लेके नहीं गया हूँ मैं. पुलिस पूरी पड़ी थी पीछे. GTA 5 में करी है. इवन सैन एंड्रेस में भी करी है. सैन एंड्रेस में आई गेस सबसे पहला वो स्पार्क जगह था उस ट्रेन चोरी करने का चलाने का. उसके बाद मैंने काफ़ी सारी ट्रेन सिमुलेटर वाले गेम्स भी खेले थे. अलग ही था यार. मज़ा आता था टोटली चलाने में. There should be some horses for us. कैसा मैड्रुगारा. अरे ये तो वही जगह है जहाँ पर हमने उस ट्रेन को बचाया. अच्छा मेरा ये मैं पहचान नहीं पाया. सेम कलर है देवा. बस सीट अलग है. सैडल. Head to El Matadero and see what they know about Luisa. चलते हैं. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there, but we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts, not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. Abraham Reyes. That's normally reason enough for Alinde. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Whoa! All right, let's find this Carlos guy. Carlos. See? We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. ये बाहर क्यों नहीं काट रहा था वैसे. कितना सही होता. कहाँ ये बंद कमरे में एकदम बराबर लाइट ऑन करके काट रहे हैं. प्रिसीजन नहीं आता होगा ना यार. $150 होने से मैं वो बुलेट की चेन खरीदूंगा जिसको बेंड डॉलर बोलते हैं. बॉन्ड डॉलर जो भी प्रोनाउंसिएशन है. जिससे आपकी गोलियां और आप कैरी कर पाओगे. वेट इन कवर फॉर द डिस्ट्रैक्शन. ओके यहाँ पर कैप्चर किया इन्होंने. वो Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¡No puedes estar aquí! Hace calor hoy.
Bien bochornoso, ¿verdad? No lo voy a decir otra vez. ¡No puedes estar aquí! Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. मैं इतना ही समझा ये प्रोहिबिटेड एरिया मिलिट्री एरिया बोल के Las mismas. बस यही समझा मैं Tiro de mierda. एंड आई के सांप भी यही समझे Cerdos. Váyanse al infierno, traidores. चलो एटलीस्ट उन्होंने गन नहीं उठाई Long enough. उल्टा चेस कर रहे हैं वो लोग This way. ¿Qué son estos gringos? This ain't good. You animal, she's just a girl. What the hell's happening? यहाँ कहना क्या चाह रहा है वो Stay with me. If you've laid a finger on her, Jesus! Come on, stay with me. मैं साथ में ही हूँ Point that at me, God damn it! This way. Where is she? This doesn't look good. Things ain't looking. Looks like we might need a little dynamite to get it open. Keep watch while I get it ready. बंदा आ रहा है With those standards, Marston. Ahead. और भी लोग आ रहे हैं यार More where that came from. Get behind the table. I'm gonna blow it. You don't want to do this, my friend. ओके गलत टाइम पे आया बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब डिस्ट्रॉय करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर ही हो Here goes. Hey, she's alive and well. I think so. Poor girl's barely alive. Barely alive. Okay, नहीं Let's मैं get गलत the hell out of here before any more of them show up. वैसे और लोग आ रहे हैं Done, sir. I taught you well. Imbécil. Estas balas lo dejarán inválido. You're all dead, amigos. ¡Muere, pelado! Observa mi puntería, pendejo. Es perfecto. Stop doing that. Not bad. Come on, this is our chance. Come on, मैं आ चुका हूँ बाहर Come on, Rickets, you can do it. मेरा को Left us some horses. Come on. अच्छा ये मेरे घोड़े नहीं है वैसे भी माउंट हॉर्स कुछ भी यार कम ऑन Let's go before any more of them show up. Yeah! Dude इतना I knew it lol
बोला इंतजार कर रहे हैं हमारा यार, कर रहे थे। ओ नो, रीलोड कर रहा हूँ मैं। चल कोई नहीं, उड़ जा भाई। If you don't stop that, you ain't gonna live! और कहाँ पर है? ओह, सामने। Let's go! वो इतना स्लो क्यों चल रहा है अभी? वो ऐसा लग रहा है वॉक करके आ रहा है, मेरे को पता नहीं मैं उसको कैसे यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। वो बंदा वॉक करके आ रहा है घोड़े के साथ, जबकि उसको भागना चाहिए। हाँ, मुझे वैसे इसकी बंदूक खरीदनी पड़ेगी। वेट फॉर कार्लोस, ओके, दैट्स व्हाई मे बी वो वॉक कर रहा था। Hey, Carlos. Gracias a Dios. Thank you for saving me. You're good men, friends of the people of this land. Was someone named Javier Escuela one of the men holding you? No, I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yeah. बाप रे, सब चले गए मुझे छोड़ के। ये तो खतरनाक चीज हुई, बट व्हाटएवर मैन। ये तो हमारे यहाँ पर काम होता हुआ ऑन +50, सो नाइस। तो अभी हमें फिर जाना है लैंड एंड रिकेट्स के यहाँ पर। डेफिनेटली एक और मिशन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें टाइम कॉन्स्टेंट्स ना हो। Lucky in love. God dang, ये इस मिशन में क्या होने वाला है? Retirar a mi cuarto y conocernos mejor, ¿eh? No me toques. Me gusta la... All right, fold. No tengo nada. Gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cards. Tarzan, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen? Na mach schon! Couple of hands couldn't hurt. Dude, मैं खेलने नहीं वाला यार। Come on, skip help. Dude, मुझे खेलना ही पड़ेगा। Another American. I don't know. Two pairs of eyes. Bold. Interesting. मुझे नहीं पता कैसा चलता है गेम। I'll raise you. लैंडन रिकेट जीत रहा है, ठीक है। This is scandalous. क्या मैं जीत भी रहा हूँ? Race. I'll check. Not for me. Dude, मैं पैसे खो रहा हूँ, इतना मुझे पता है। I think it's about time I showed you fine fellas how. कोई अंदाजा नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। कॉल करे जा रहा हूँ भाई। Look at that. A little bit. Dude, मैं जीत गया क्या? पता ही नहीं था। You
fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller. कहना क्या चाह रहा है? Now, there must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh yeah, you know. Easy there, Germany बोला क्या इसने? Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. हारे हुए लोग ऐसे ही बोलते हैं. I mean, He's up there. गिरे हुए लोग. ये मैं कहना चाहूँगा. गिरे हुए और हारे हुए. ये लोग ऐसी चीजों में ऐसी चीजें कहते हैं. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. लग रहा है सब मरने वाला है. Here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. हाँ, एक और बात, जर्मनी. मैं डेफिनेटली मारना नहीं चाहूँगा हाथ पे. मे बी हाथ पे एम करें तो ज़्यादा बढ़िया. बट क्या हम कर सकेंगे यहाँ पर? क्या वो अलाउ करेगा? I mean, ये जो इवेंट है. I want to make sure you know how this is going to work. ड्यूएल होने वाला पहला इस गेम का ड्यूएल है ये. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands. इसे कंट्रोल कैसे थे? I mean, Let's get this over with. आ रहा हूँ. What I told you. मैं उम्मीद करता हूँ Stayed home, Yankee. एक ट्राई मैं कर लूँ. You have accepted a duel. A to skip the tutorial. नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में. मैं भूल चुका हूँ actually. To draw your gun, use LT, pull back, move your hand toward your gun, press forward to अच्छा. मार भाई. डूड मैं समझा नहीं. मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी लास्ट में. क्या लिखा था वहाँ पर? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी. वहाँ पर क्या लिखा था? क्या? डिफीट मूलर. क्या एक और बार ट्यूटोरियल आएगा? Nobody steals from me, especially an American. मैंने हेड पे एम नहीं करी थी, इतना पता है मुझे. क्या लिखा था? Move your hand toward your gun, then press forward to draw when you wish. ठीक है. अब use the aim to place shots. ले. क्या मैंने मार दिया? We've earned ourselves a drink. God damn, मैंने मार दिया. मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था बट होल्ड डाला यार इसको. Your health. You, the man they call Marston, see? चक्कर क्या मैन? Watch me cut her throat. उससे पहले तू चला जाएगा यहाँ से. मैं मजाक नहीं कर रहा. Tú y yo, Marston. Peleamos ahora, We fight now. सेम चीज मजा आएगा बट ये एक अलग सेटिंग पे विदाउट किलिंग द हॉस्टेज. Dios mío. I can do it बिना ट्यूटोरियल के. यो है ना बात कर दिया हमने. इसके और ही बंदे आ गए. We got this covered, Marston. Put them all down. Not bad, Marston. Well, partner, I think we can safely say this poker game is over. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player.
तो ड्यूल में जो मरते हैं ना वो इज्जत के साथ मरते हैं, बिकॉज दिक्कत नहीं होती उनको मारने में। मैंने जैसे कि यहाँ पर देखा ज़्यादा लोग रोते ही नहीं उसके लिए क्योंकि ऑफिशियल डेथ है एक तरह से, कहीं ना कहीं कानूनी मौत है वो, कहीं ना कहीं यहाँ। यार लैंडन रिकेट्स यहाँ पर एक और मिशन है, ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि पासा बट ये लगता है टाइम कांस्टेंट वाला है, नहीं। Sorry, ma'am. I'm a married man. The Mexican wagon train. Hey, Gringo. Mr. Ricketts. Come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You lived the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman, got me a farm, then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found Dude, you. ये तो लुइसा है, You, Mr. एक और बार। Please sit down. You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. Let's go. Let's head थोड़ा for पेल के आते हैं लोगों को, हाँ फायर वर्क्स करके आते हैं। अल्टीमेटली ये कहना चाहूंगा मैं, फायर वर्क्स बोलते हैं। लेट्स गो। घोड़ा क्या है मेरा? मेरा घोड़े का सैडल मुझे याद है, ये रहा ऐसा दिखने में। जैसे हम सैडल आएंगे चेंज कर सकते हो कि नहीं पता नहीं। अकॉम्पनी लैंडन। Luisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever And forget? who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Ricketts. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived it. Do you see that?
Dude, ये क्या पूरी की पूरी जनता है यहाँ पर? मैं को कहना चाहूँ जनता है पूरी मैन। Bro, मैंने पहले ही छोड़ दिया। क्या चक्कर है यार ये लोग? क्या पहन के आया मैं? Sorry. Let's go! Now, what you still can. My lord, we need to get these prisoners to America. They'll be safe there. Head for the bridge. पर मुझे लगता नहीं यहाँ पर सेफ्टी होगी। डेफिनेटली बंदे लोग आने वाले हैं दिक्कत देने के लिए। सो फार बड़ा स्मूथ लग रहा है राइड यार। कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ओहो मुझे पता लग ही रहा था यार, ऐसे कैसे स्मूथ हो जाएगा भाई? सामने चच्चा लोग हैं। ये मरा कैसे नहीं? सामने देख रहे चच्चा बैठा है मेरा लॉल। ओह नो ब्रो, अच्छे से मार नहीं पाया मैं। वो चलते हैं। ब्रो नीचे देख रहे हो? कैंटलिंग गन लेके आए हैं लोग, बाप रे। अब मेरे पास गोली नहीं है बाय द वे। पूरी गोली खत्म हो गई यार। अब तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है मैन। I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. उसके मिशन बचे हैं वैसे। मैंने कहाँ पे सारे नहीं करे। You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. Successful trip notched up.
माय सिस्टर कीपर, सिस्टर्स कीपर। तो यहाँ पर हम लुइसा का पहला मिशन करने वाले हैं, जो कि मैं कहना चाहूँगा बैड एज है मैन, कमाल का है। टोटली काउबॉय वाइब देता है, आई मीन टोटली गेम ही काउबॉय वाला है, देना भी चाहिए। Este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family is indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility's almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. I would too. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto, su barco sale al anochecer, no queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. सॉरी ये वाला मिशन नहीं, आई गेस इसके बाद वाला लुइसा का एक और मिशन है, वो बहुत कमाल का है। Emilio works as a driver. We will take his stagecoach. अच्छा स्टेज कोच लेंगे, ठीक है। एक टाइम लिमिट भी आ रखा है, लॉल 1 मिनट में बचाना है ऐसा लग रहा है। अरे कितनी बड़ी स्टेज कोच है मैन, कहीं नहीं बैठने जा रहा हूँ मैं, चलाते कैसे हैं इसको। अब ठीक है, Let's go before I change my mind. Before I change my mind. Pressure is on, I guess. Oh, ये wolves भी आ रहे हैं मैन। Oh no, लौंडे है यहाँ पर। ¡Paren! ¡Papeles! Este camino está prohibido. प्रोहिबितो बोल दिया। What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. ¡Disparen! ¡No le dejen escapar! क्या? अबे हट यार, घोड़ा बेचारा मर जाएगा। चलते हैं अब। ओह नो, रोड ब्लॉक कर रखा चौधरी। वो गैटलिंग गन है, बहुत ज्यादा करारा डैमेज देगी। The army, or they will kill us both. I see more of them. Go right here. No, I want the mask. और भी उनके झंडे दिख रहे हैं मुझे। Don't go around, you can make it. पूरा स्टैमिना ड्रेन कर डाला मैंने। Train tracks. Head right. We will get back to the main road. Por el amor de Dios. Whoa! हट जाओ भाई, सनडाउन होने वाला है यार, बहुत कम वक्त बचा है। वुल्फ भी यहाँ पर तो यार
जो कि बड़े वाइल्ड है मैन। क्या हम पहुंच जाएंगे? लग तो रहा है पहुंच जाएंगे यार, काफी आसान जा रहा है सब कुछ, स्मूथ एज लेट तो नहीं बट थोड़ा बहुत स्मूथ जा रहा है। अबे यार इनसे लड़ नहीं सकता मैं, टाइम पर बात नहीं कर सकता। चल तेरे मैन। कैटलिंग गन लेके बैठे हैं, मजा आ गया क्या देवा। नाइस, पहुंच गए। Gracias a Dios. We made it in time. Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. In some other life. You should get going. Travel safely. ओके नाइस, वो सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सही है यार, पूरी 11 मुल्कों की पुलिस आ गई थी, ऐसा फील हो रहा था। हर जगह से लोग आए जा रहे हैं यार। देख पूरा ब्लडी कर दिया, क्या चक्कर है? पसीना है गेस। आई थिंक सो। ये फाइनली इनके इनके कैसल के यहाँ पर आया हुआ पूरा का पूरा एकदम कार्टेल हाउस की तरह रे देवा। अरे कम बैक बिटवीन 7 से 10 यार, ये तो बहुत ही गलत हो गया मैन। ठीक है, डीमन ड्रिंक। Eres llorón, maricón. Me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito sin vergüenza. ¿Qué diablo es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring 2 men to justice. Nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him.
Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force, force, must be used if you're to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. क्या क्या करना पड़ रहा है यार इसको कैप्चर करने के लिए. अब इसकी हेल्प करनी पड़ेगी हमें. यहाँ टाइम. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. I sent some men ahead. We will meet them there. Okay, mount your horse. बाप रे. यहाँ तेजी से गया वो. इसमें अच्छी बात लगती है जो रॉकस्टार गेम्स में जो भी रास्ते खाली रास्ते हैं यहाँ पर बातचीत होती है, मिशन के बारे में पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है जो रॉकस्टार करता है काफ़ी ज़्यादा अपने गेम्स में. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in. इसी की बात कर रहा था. कोलोनेल एलियंदे वही था जैसे हम कुछ ही देर पहले मिलते हुए मिले. We're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs education like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance. ये चमचा है सीधे शब्दों में. काफी क्वालिटी चमचा है अपने कोरोनेल का. More stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on. I will race you there. Right behind you. You just wait. I'm coming. मैं उसे जीतने नहीं दूंगा किसी भी हालत पे. कम ऑन. इस स्कूतरी को तो नहीं. So, I guess we ain't taking any prisoners then. Traitors will be made to suffer. Shown that we will not tolerate the rebellion any longer. पहुंच गया. रेस में स्मूथली हराया बट सीन क्या है यहाँ पे. Whoa! Why are you stopping? Desanta, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Nos debe un favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. चक्कर क्या लोग का यहाँ पर. देखो बंदा आ गया. प्रो क्या डैमेज दी दे रहे मेरे को. रुला दिया मैन.
ये क्या वॉकिंग कर रहे हैं क्या? अच्छा ये तो अपना ही बंदा है। I heard the little horse crying in that house over there. क्या कर रहा है ये? Nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Dude, information के लिए बहुत कुछ करा रहे हैं यार ये लोग। Vámonos, muchachos. Buen trabajo. अब क्या मुझे जलाना पड़ेगा सही में? Bingo, Capitán de Santa. You heard the captain. The fire bottles are over there. Por aquí, imbécil. ¿Por qué no me sigues? Venga, let's do it quickly. I want to go home. मुझे भी घर जाना है भाई। Good. Abort another one. Now the last one. Okay, this one's for you. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. क्या मतलब सामान की बात कर रहा है ऐसा लग रहा है। ओके Locuras. फेम प्लस 350 तो नाइस।